My name is Annie, your anchor for this evening. It gives me immense pleasure to welcome you all to this wonderful evening organized by Ringing Bell Private Limited, where we have gathered to introduce our brand new mobile handset called Freedom 251. But सबसे पहले इस खूबसूरत सी शाम के आगाज़ के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी मिस्टर शब्बीर को, जो अपनी आवाज़ से इस महफिल को गुलजार करेंगे. So ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Shabbir. To welcome Dr. Murli Manohar Joshi ji, I would like to call upon Mrs. Dharna Goel. Everybody put your hands together for Dharna Goel. May I have the pleasure of requesting our dignitary to kindly take the respective seat? And now I request Mr. Ashok Kumar Chadda ji to give all of us the pleasure of welcoming you all. Everybody put your hands together for Mr. Chadda. Namaskar and a warm welcome to all of you. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया है, but due to unavoidable circumstances, the cabinet, I understand, is still in session as I speak with you, and Honorable Minister of Defence Shri Manohar Parrikar ji is not yet able to join. इसलिए मैंने आपसे आके गुजारिश करी थी, तो आपने कहा नहीं आरंभ करें. तो मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सबकी यही आज्ञा है तो क्यों ना करें. तो हम यहाँ हैं. सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज एक ऐतिहासिक पल है हमारे रिंगिंग बेल्स कंपनी में. हम जो पेशकश कर रहे हैं आपके सामने, ये एक पेशकश सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है. This is an offering along the line of a journey that we have embarked upon. हमने मोहित गोयल जी, मैं, सब मिलके हम लोगों ने तय किया कि एक सफ़र हमें झेलना है, और वो सफ़र है परिवर्तन का. The journey is of change. So we thought, what is it that we can do to help? The platforms of Digital India were made available, the platforms of Skill India and the platform of Make in India. Along these lines, we thought, let us see what can we do to bring about a real liberation of freedom to all our brothers and sisters who may be in the rural areas, the semi-urban areas, and who need communication and digitization as an ability, a tool to come into the mainstream. With that, we have come to you with our offering of a 4-inch Android 3G smartphone, which we wish to start offering from tomorrow morning. The bookings will open and the price of 251. Ladies and gentlemen, it's a great pride for us to have Dr. Murli Manohar Joshi ji here, whom I have known and followed closely for the last 15 years. He is not only a great scientist, an excellent technocrat, but a wonderful human being. I will not take much time because I know we've already got delayed, and as the evening unfurls, we start sharing some anecdotes with you. With that, I will request that we proceed with the lighting of the lamp ceremony under the grace of Dr. Murli Manohar Joshi ji, please. So Annie, over to you.
Thank you so much, sir. With this, I would now invite Dr. Murli Manohar Joshi ji to please come and speak some words for us. Thank you. All right. Before we do that, I would request all of them to please maybe have the pleasure of lighting of the ceremonial lamp now. I request Dr. Murli Manohar Joshi ji, Mr. and Mrs. Goyal, and Mr. and Mrs. Chadda ji to kindly come forward and inaugurate the function. Thank you so much. May I have the pleasure of requesting all the dignitaries to kindly take their respective seats, and along with that I also invite Dr. Murli Manohar Joshi ji to please come and speak few words for all of us. Thank you. What was yesterday a luxury is today a necessity. What was yesterday a luxury is today a necessity. I see all of you people in front of me with all your smartphones, taking away selfies, taking photographs, and I'm really thrilled because this has become the order of the day. So with that, I'd like to say that really, when I mentioned earlier about Make in India, Digital India and Skill India, Dr. Joshi had a few words some years ago. And he said, India innovates, India makes, India leads. So gentlemen, those are the three words. India innovate, make and lead. And really, almost 10 years later, we are talking about the same ethos. It's time that we got up to do something about it. And it is not really all about government policy alone, but it is about the aspiration and the meaning of the word freedom, Azadi. Now, there are many connotations to Azadi. I'll leave each of you with your own. But for me, liberation and freedom is about equality of opportunity. With the Freedom 251, our latest offering, we intend to engage and bring to the people, to the youth, the knowledge and access to immediate real-time information and connect. To the farmers, soil forecasting, weather forecasting, so that they can plan their cropping patterns and improve their productivity and yields. To the fishermen, again, weather forecast of what is happening with the tidal waves, so that not only do they look after their catch, but also their safety. And for the ladies of India, sometimes forgotten, we would like to offer a means of online safety. The apps would be installed so that they can ring for help and look after themselves. We can assist in whichever manner we can. Having said that, we are also bringing in, hopefully, as we develop this phone, we would be bringing in some medical applications, Eco ECG, which means
You can take your ECG on the phone and transmit it to your doctor. You do not need to be able to go to a hospital. Again, another idea that Dr. Joshi gave us. What about some apps for an application for the specially abled brothers of ours? Another area that we would look at. So in terms of what we are doing, this is totally in sync with our current government's plans of really digitizing India, bringing in a new kranti, a new revolution that spurs equality and opportunity for all. With that, I will request Dr. Murli Manohar Joshi ji to kindly say a few words to us. I have a comment from Mr. Saklecha ji to also share with you on, so far I've shared what is 251. He mentioned, why don't I also share with you, which all of you have a lot of questions, on how is 251. Correct? I looked at this laughter. Very good. So why, is that what you want to know, right? Absolutely. You're staring, absolutely. Done. Well, gentlemen, here it is. We are technocrats and we have some understanding of international economics. So the first thing is that the government today has announced a 13.8% duty protection for Make in India. We expect that even with the bulk sourcing of major components such as the chipset, etc., the cost of our production would be in the region, maybe could be in the region of 2,000, 2,500 rupees. If I take it away, if I take away the benefit of the duty, we don't want to retain it. We want to pass it on. It leads me to believe sometimes when you know phones are launched, they are launched at astronomical prices and within 6 months the price platforms change because maybe the models change, perhaps. But we are not looking at that. We are looking at it completely differently. So I mentioned first that we will pass on the fiscal benefits. Then for Startup Stand Up India, for young entrepreneurs, and I have a number of them led by Mr. Mohit Goel with me, there are again incentives and benefits available. We would not retain them. We will pass on that benefit again to the consumer. Most importantly, today in India, the total sale of hand phones is about 2 crores a month. What is the sale of smartphones? Somewhere around 30%? Yeah. So if it is 30%, you can see how much are feature phones. Right? So that's the revenue, that's the block of change that we want to bring into the country. So when we do the economies of scale, there is a huge reduction in cost of production. Correct? Right. I'm happy I've got a very receptive group of people. Thank you. Now another one. When you have online business, you have a huge reduction in marketing and selling costs, isn't it? No commissions, straightforward. Go to the payment gateway, lock your money in and you got the phone. So that is another cost. Now these are two huge reductions. I'm not talking about production of 1 lakh units a month or something. I'm talking of multiples of that. Today, most companies are happy if they can do 1 lakh, 2 lakhs. I'm not talking about that at all. Because when I just mentioned the figure is 2 crores a month already. Huge. So that is what we will leverage to give a tremendous reduction in cost of production. And not the last but not the least, I will also share something which I thought we'll make public only today, which is the market innovation. We have decided that once we create this marketplace, which is the handset, we will invite partners who need to showcase their goods for sales. So just as what's happened with the online shopping to the malls, the same thing will be driven by Freedom 251. And again, the benefit that we accrue from that, we do not intend to retain. I can only assure you
that at Ringing Bells we are very clear. We are in it for reasonable, sustainable profit, not for avaricious profit. We want to see the true digitization of India, not just glib talk. So here it is, we've put in a lot of resource and a lot of thought. I've explained to you the technology, I've explained to you the industrial engineering, I've explained to you the design, logistics and economies of scale. I've also shared with you the marketing innovations. And that is how we reach the figure of 251. So gentlemen, we need your blessings, we need your support while we change the dynamics of the mobile handset market, first in India and then globally. So I hope I've been able to answer Saklecha ji's questions, and of course we'll take them on further as we go along. I also have our head of technical with us to answer any technical queries should there be as we progress in the evening. But with that, may I take your permission, I know it's getting late, unless there is anything specific you want to know, to request and proceed in requesting. Maybe what I'll do is, taking advantage of the break, I'm going to ask Mr. Saklecha to kindly come in first, and then request Dr. Murli Manohar Joshi to kindly address us. So is that, with your permission again, is that okay? No. Go ahead. A mic please, I can't hear you. Can we have a Q&A right now? Sorry? Can we have a Q&A right now? After the program we will take it, let this go through, if that's okay. We'll do it all together. Fine? Okay. So, sorry, yes, just a minute please, just 2 minutes, we'll just take this through. Just 2 short ones please, with your permission. Mr. Saklecha and Dr. Joshi, then we will unveil the phone and vote of thanks, and we are open for Q&A and dinner. Okay, is that okay? Thank you. Just a minute. Mr. Saklecha. मंच पर विराजित सम्माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंच पर विराजित सम्माननीय श्री गोयल जी, श्री अशोक चड्डा जी, मिसेस गोयल, उपस्थित सभी मित्रों, पत्रकार बंधुओं, काफी लंबे समय से देश के आखिरी छोर के व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति तक डिजिटल इंडिया कैसे पहुंचे, उस पर लंबी चर्चाएं चल रही थी। उन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए जब मिस्टर गोयल चर्चा करते हुए एक बार मेरे साथ बैठे, चड्डा जी के साथ आए थे कि भाई हम एक मोबाइल लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत कंपनियां कर रही है, आप भी करिए, बहुत है पूरी दुनिया में करने वाले, आप क्यों आए, क्या कारण है? उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ नई सोच के साथ, जो सम्माननीय मोदी जी का सपना है कि देश के आखिरी छोर तक डिजिटल इंडिया का फायदा पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति के पॉकेट में फोन आसानी से पहुंच सके, और सबसे आखिरी छोर के व्यक्ति, जब मैं ग्रामीण सेक्टर से आता हूं तो वो व्यक्ति सिर्फ फोन में क्या चाहता है, अगर वो रात को खेत पे जाता है तो कभी अगर उसको बिजली की, राजस्थान या कई राज्यों में जहां बिजली की कमी है तो बिजली जब तक नहीं आए तो जगने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ पिक्चर देखता है, कुछ गाने सुनता है, कुछ जरूरी अगर किसी का फोन आए तो वो फोन सुन ले, 25-50-100 फोन की मेमोरी उसमें चाहिए, और एक ऐसा फोन चाहिए जो अपडेट भी हो, वो दुनिया को देख सके कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अगर उसमें 3G है और उसमें अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो ही कैन सी व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड।
तो ये सब फीचर का जब ये फोन की बात उठी और जब वॉल्यूम की बात उठी तो खेल यहीं से शुरू हुआ जो चाइना ने किया। जो चाइना ने किया वो भी एक ही गेम किया, वॉल्यूम। अभी तक इंडिया में किसी ने इतने बड़े वॉल्यूम पे और किसी ने भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप की बात नहीं करी। We must understand when any new generation comes, they think in a totally different way. How to do, what to do, and how to come at the top end. And they try to do. I'd seen the product. I had feeling that it will change the total world's mobile इकोनॉमी और पूरी दुनिया में जो परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है। मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो कल तक मध्य प्रदेश में था। जब आज सुबह अखबार में विज्ञापन आया, आई हैव रिसीव्ड एटलीस्ट मोर देन 100 कॉल्स, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट इंटरनेशनली आल्सो। How it is possible in 5 pound this phone can be $5, less than $5. How it is possible? That is why I asked in between. I had broken the decorum of the stage and requested Mr. Chadda, you explain that how you will do. The whole thing cannot be explained in a minute on the stage. But I can only congratulate Mr. Goyal and Mr. Chadda to have that courage and to offer the public the real cost mobile. And he is working on the best economy with highest volume to the last, कहते हैं ना, अंतिम फ्लोर के व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल जी का सेंटेंस था, अंतिम फ्लोर के व्यक्ति तक के अफोर्डेबिलिटी की रेंज का मोबाइल। दे आर आल्सो कमिंग अप विद डिफरेंट मॉडल्स। दे विल कम अप विद अ स्लाइटली इन बिटवीन मॉडल। आई थिंक मिस्टर गोयल माइट एक्सप्लेन, which might be around 2000 to 3000, which will have any update, more features. But जो 90% लोग यूज करते हैं वो सामान्य फीचर, जो वो सब फीचर इस 251 रुपए के फोन में अवेलेबल रहेंगे। और मैं इसलिए इनको बहुत बधाई भी देता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि जो सम्मानीय मोदी जी सोच रहे हैं आखिरी व्यक्ति तक एक अच्छी फील और अच्छा दुनिया को देखने का मौका, वो इन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसलिए इनको शुभकामनाएं देते हुए, और ज़्यादा बात तो जब बड़े लोग मंच पे बैठे हो, माननीय मुरली मनोहर जोशी, तब मंच पे ज़्यादा देर हम लोगों को माइक को होल्ड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और सम्मानीय गोयल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, आप सबके दर्शन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much. With this, I would again call Mr. Chadda on the dais to please carry on from here on. Thank you. I'm going to request Dr. Murli Manohar Joshi ji to kindly come and share his thoughts with us. Dr. Joshi. मंच पर विराजमान श्री गोयल और श्रीमती गोयल, श्री चड्डा जी और श्री ओम सक्लेचा जी, और बहुत देर से इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में पधारे हुए दूर दूर से आए देवियों और सज्जनों, पत्रकार
और मोबाइल फ़ोन मित्रों। अब तो दोस्ती मोबाइल फ़ोन से होती है। बहुत साल पहले जब मेरे पास साइंस, टेक्नोलॉजी और शिक्षा मंत्रालय थे, तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इस सूचना संचार के नए विज्ञान की शुरुआत इस देश में की थी। और तब हम लोगों ने ये फैसला किया था कि इस देश को आईटी से शिक्षित बनाएंगे। और बहुत सारे आईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईआईटी, ये उस समय वाजपेयी जी के ज़माने में हमने बनाए। और ये फैसला किया था कि जितनी छात्रों और छात्राओं की संख्या उस समय मौजूद थी, उससे तिगुनी कर दें। और वो बहुत जल्दी हो गई तिगुनी। और उस वक्त एक बात मैंने कही थी, वो अभी एक हिस्सा तो चड्ढा जी ने आपके सामने रखा। उसका मतलब ये था कि इंडिया इनोवेट्स, इंडिया कुछ नया करेगा। कहीं से उधार लेके टेक्नोलॉजी लाए, उधार लेके कोई मशीन लाए और यहाँ बनाए, ये नहीं, कुछ नयापन करो। अगर कोई टेक्नोलॉजी चल भी रही है तो उसमें कुछ नयापन लाओ। तो इंडिया इनोवेट्स, इंडिया कुछ नया करेगा, किसी की नकल नहीं करेगा, नया करेगा। और इंडिया बनाएगा। इंडिया इनोवेट्स, इंडिया मेक्स। और अगर कोई देश नए सुधार करता है और उन सुधारों के आधार पर अपने यहाँ निर्माण करता है, तो फिर वो पीछे नहीं रहता। इसलिए तीसरा मैंने नारा दिया था, इंडिया लीड्स। इसलिए देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। हिंदुस्तान किसी के पीछे नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे जाएगा। उसके बाद लोगों ने हमसे ये कहा कि ये टेक्नोलॉजी, ये कैसे इसको आप पहुंचाएंगे, ये कितनी कीमती होगी, ये नई चीज़ आ रही है। तो उस वक्त मैंने एक और बात कही थी कि टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन अगर बहुत महंगी हो तो बेकार है। इसलिए पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होनी चाहिए, आप तक पहुंच जाए, आप उस तक पहुंच सकें। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी आपकी जेब की को काटने वाली नहीं हो, आपकी जेब की ताकत के अंदर हो। इसलिए टेक्नोलॉजी शुड बी अफोर्डेबल, यानी टेक्नोलॉजी आपकी पहुंच में हो। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी आपकी जेब के अंदर दाम के मुताबिक हो, मगर खाली लिफाफा ना हो कि हाँ भाई जेब के दाम के अंदर तो है, अब 250 रुपये ये बोल रहे हैं, जेब के दाम के अंदर तो है, मगर इट शुड बी यूजेबल, मगर उसको आप व्यवहार में ला सकें, काम कर सकें उससे। तो ये उस समय से हमने शुरुआत की थी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो कुछ चड्ढा जी और गोयल जी और उनके और तकनीकी लोग जो काम करने जा रहे हैं, उसमें दोनों बातें हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है और यूजेबल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत से उसमें ऐसे फंक्शंस हैं जो आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी हों, किसानों के लिए है, मछुआरों के लिए है, छात्रों के लिए है। और जैसा उन्होंने कहा, मैंने उनसे बातचीत में कहा था कि एक और हमारे देश में ऐसा वर्ग है जिसको आप कहते हैं विशेष अंगों से वाला, कोई नेत्रहीन है, कोई पाँव से नहीं चल सकता है, किसी के हाथ ठीक काम नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो कुछ उसमें शारीरिक दृष्टि से कुछ विशेषताएं हैं, तो उनके लिए भी इसमें कोई एक फंक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी भी वो पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुधंधी है, मल्टीपर्पज़ है, सस्ता है और हिंदुस्तान में बनाया जाएगा।
तो ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो शायद अभी तक जितने भी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें नहीं है। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मोबाइल है, ये जो प्रधानमंत्री ने एक देश के सामने कुछ नए नए लक्ष्य रखे हैं उनसे मेल खाता है। ये भारत में बनेगा, मेक इंडिया, मेक इन इंडिया। दूसरा, इसमें नयापन है, इसलिए स्किल इंडिया यहाँ बनेगा भी, तो इसमें और सुधार होंगे। फिर नए लोग आ रहे हैं इसमें, तो स्टार्टअप इंडिया। और मेरा ख्याल ये है कि आगे चल कर के ये खाली स्टार्टअप ही नहीं होगा, स्टैंड अप इंडिया भी हो जाएगा, देन वॉकिंग इंडिया भी हो जाएगा। और फिर अगर आप सब लोगों का सहयोग मिला तो ये मैराथन रनिंग इंडिया भी हो जाएगा। आगे आगे चलना है, रुकना नहीं है, और इसको हमेशा आम आदमी के लिए सुलभ बनाए रखना है। मैं इन शब्दों के साथ श्री गोयल जी, श्रीमती गोयल, श्री चड्ढा, श्री सतलेचा, इन सबको बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा आयोजन आपने किया है और एक बहुत अच्छी चीज़ जो देश के आम आदमी तक पहुँचेगी, जो गांव तक पहुँचेगी, गरीब तक पहुँचेगी और उसको दुनिया की हर कोने से जोड़ेगी। इसलिए मैं एक बात और कहता हूँ कि जुड़ते चलो और बढ़ते चलो। ये आपको जोड़ते जाएगी और आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाते जाएगी। तो इसलिए आप ये समझें कि कितनी बातें हो गई। एक तो यह है कि जुड़ते चलो और बढ़ते चलो। दूसरी हो गई कि इंडिया इनोवेट्स, इंडिया मेक्स एंड इंडिया लीड्स। फिर एक हो गई कि टेक्नोलॉजी शुड बी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और यूजेबल। ये सब जितनी भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं उसको करने की इन्होंने कोशिश की है। और इसलिए जब ये मेरे पास पधारे और इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट, और अब तो ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये तो आपके सामने साकार होने जा रहा है, उसे मुझे बताया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ यहाँ। आप सबको भी जो इससे जुड़ेंगे उन सब से मैं कहना चाहता हूँ, जो इससे जुड़ेंगे वो बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for your kind words, sir. With this, I would like to call upon Mr. Joshi and Saklecha ji for unveiling a phone. अरे नीचे कर भाई, कैमरा
Congratulations to the Bell team. इसी के साथ साथ I would like to call upon Shri Mohit Goel ji for the vote of thanks. Everybody put your hands together for Mohit Goel ji. Thank you. I am very thankful to Sri Joshi ji, Sri Sakrecha ji and Sri Chadha ji जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ सभी मीडिया का. And I'm very thankful to all my distributors and retailers who have given their precious time to us. रिंगिंग बेल्स का ये वादा है जो श्री जोशी जी ने अभी आपको बताया कि हम 251 रुपये में फ़ोन देने जा रहे हैं. ये फ़ोन 30 जून तक सभी को डिलीवरी कर दी जाएगी और आने वाले कुछ टाइम में इसके साथ साथ नेक्स्ट 1 ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर में हम बेल के सिम भी प्रोवाइड कराएंगे. जिसमें भी कुछ नया होगा वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा. अब थैंक यू. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी अतिथि से आप कृपया भोजन लीजिए. एंड थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Now, gentlemen, is this how you want it, or do you want us to come to the podium and we can be around? No. Okay, here it is. So माइक पकड़ना. kindly, माइक पकड़ना. question 1. पहले दो माइक पकड़ो यार, माइक पकड़ो. I am going to answer भाई माइक पकड़ो. no subsidy from the government. माइक पकड़ो यार. As much as I can Hindi करूँगा, I'll do Hindi and English. पहले हिंदी में पहले हिंदी में कर दीजिए. अच्छा, बोलिए. रेडी फॉर यू. पोडियम नीचे चड्ढा जी. Okay, just a minute. So here is what I'm saying. I was asked a little while ago, what is our production plans? Here is the answer. We are at the moment beginning with the assembly of units in Noida at Ecotech 3. Okay, and our idea is to put up 2 plants, one in Noida and one in Uttarakhand. However, with the huge volume that we see throughputing, we need plants around the country. We have in advanced dialogue with the technology suppliers and we are ready for those. Okay? Now, as far as that is concerned, माइक प्लीज. as far as the technology platform is concerned that is available, the issue now is where to locate the plants. What we have found out in our business plan is that we need a total of 5 plants to meet the demand that we think will come up. सर कितनी डिमांड आने की उम्मीद है? 8 minutes, I'm giving you the answer. Right, so this is what I think will happen. Now, what is the next step that we have to take? The next step that we have to take is to energize our 2 plants in Noida and Uttarakhand and wait for the GST to see what is the impact. If there is no GST, there is another permutation combination of plants. If there is GST, then there is another permutation combination of plants. की बात करें तो इस फोन कोई 2,500 रुपए के करीब में है. ओके, हमने कहा है कि ये जो 2,000 के करीब में जो मिलता है, इसको मैंने जो आपसे पहले कहा कि हमारा जो ड्यूटी का बेनिफिट है वो है 13.8%. So जब हम बनाएंगे हाउ मच इन रूपी टर्म्स 13.8% of 2,500. It means roughly 400 rupees. Okay? एक मिनट मैं वही आपको समझा दे. Slowly. Now, एक तो ये घटा और उसके बाद जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो प्लान का साइज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके दरमियान because of that the economy of having such a large plant, not 1 lakh number a month etc. we're talking much bigger numbers. इसमें जो हमें कटौती मिलेगी will be about another 400 to 500 rupees. उसके बाद because we are going to do online sales. Because we are going to do online sales
cost of selling and marketing and the employment of people as direct and commission agents is much reduced. That is also another 480 rupees. So ये तीनों अगर मैं टोटल करूँ तो 1500 रुपया कम हुआ। 1500 रुपये कम हुआ। अब रहा मुझे जो मेक करना है, मेरे हाथ में आया 1000 रुपया। अब ये मैंने आपसे कहा था कि मार्केटिंग इनोवेशंस, मैंने पहले कहा I am going to use my platform of the sale of what we are selling. जो 2 करोड़ की आज की product है, the sale of India is 2 crore numbers a month. By the exit of the first 12 months, I expect that we at 251 will have a sizable percentage of it. Okay? देखिए जितना हिंदी आती है उतनी बोलूँगा, बाकी आप कंसिडर कर लीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूँ। तो ऐसा है, तो उसकी 11% शेयर मेरा होना चाहिए। हमने एक अनुमान लगाया, पहले साल में जो एग्जिट रेट होगा नॉट दैट डे 1 से, तो 12 महीने में कुछ नहीं तो हम 30% मार्केट में जाएंगे। 30%। Now इसको आप सोचिए, to leverage that, the platform that I provide to other people who have products to piggyback on my sale. सुनिए क्या कह रहा हूँ, to piggyback on my sale. मैंने जो प्लेटफॉर्म दिया उस पर आप आगे आके अपना बिजनेस करें और उनसे जो मुझे रेवेन्यू आएगा उससे मैं मेकअप करूंगा 700-800 रुपया। अब ये जो हमारी है, हमने ऑलरेडी एडवांस डायलॉग में है काफी ऐसे मार्केट प्लेसेस से जो हमारा प्लेटफॉर्म चाहते हैं। सो आपने ये पूछा, मैंने आपको खुल के बता दिया। सो देयर इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन, logistics innovation. Somebody talked about bill of materials innovation, how we cut costs, productivity improvement, selling cost reduction, and marketing innovation, which I just shared with you. So this is where we've reached, and this is how we intend to sell. We are opening the booking for up to the 20th. We will complete deliveries of that up to the 30th of June, maximum. सिर्फ ऑनलाइन बेचेंगे, अभी ऑनलाइन बेचने का आप आम आदमी तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, आम आदमी ऑनलाइन नहीं कर पाता है। एक मिनट, हमारे जो ऑनलाइन है, प्लस आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आई डोंट नो हाउ मच यू पे इन द रूरल एरियाज आई हैव। व्हाट इज आजमगढ़? बच्चे, व्हाट इज आजमगढ़? Selling urban. Every man, you know the penetration of the internet, you must go and see. Anyway, well, I don't want to go into that, but what I'm saying, and again, extended to that, we have our distributor and retailer network already in position. And we have 657 service after sales service stations activated. And then just a minute, can I answer one at a time, please? Has the production started? For each phone to make. I just answered, I think that going back to the beginning, I answered that. आपके बारे में कोई जानता नहीं है, या अचानक ही कंपनी आई है, आपने फोन बनाना शुरू कर दिया है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? Do I need to justify कि मेरे को जानता नहीं है, जानता है? My product speaks for itself. मैंने आपसे सिर्फ बड़े निम्नता से निवेदन किया, ये हमारी पेशकश है, तुम पार्टिसिपेट। ना ऐसा है, हमारा इतिहास जो है आपसे वो भी शेयर कर लेते हैं। The promoter family is agri-commodity based for 3 generations. Fully panned out, largely anchored out of UP and Haryana. Now, they have panned out, the network reaches to the last village. I'll just say that. To the basis of that, we've got technology and technocrats like myself, so we blend the two and we get a huge synergy. आपने कहा हमसे नहीं जानता, when we talk about science and technology, people do this. Okay? We are from different places. 1 second please, I'll take all questions. So this is the answer that I'm giving you. Whether now you can tell me आपको जानता नहीं, sir मैं भी आपको जानता नहीं, आपने मेरे सामने अब मैं से ज़्यादा क्या कहूँ? Let that ride. Our work, our product, our service, and your best wishes will speak for us. सर पैसा कौन लगा रहा है? थैंक यू सर। With the volume, we are going to scale up each line. ठीक है ना? क्योंकि हम स्केल करेंगे each line को, we will get the economy of scale. I'm still saying between 230-250 crores. What have I said? What we have said, yes. So what is the capacity? Just a minute, I just said that answers your question. Now another one. Let me finish the final. Then somebody said, where is the funding from? So today the funding is from the okay, and
this is the of 3 generations. So that is what we are putting into the project. And just say, Abhi मैंने कहा, we are committing a pilot of 2 plants at 250 crores each. You know how big equity works, so you can assess. I don't know. Please hear me. Just a minute. Promoter company is formed by the promoters. It's a trading commodity business. We have the Goyal family, which has come in to promote the business. The business requires an investment of about 250 crores per plant, which is on a debt equity basis, and this is how we will take it forward. How much is the equity? How much is the equity? This question I must answer. A 500 crore project is based on debt equity. What is the equity? 1 minute please. The funding from banks and institutions is normally in a gearing of 1.5 to 1. अगर ये लोग कहेंगे आप समझे जो फाइनेंशियल क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं तो उसके तहत आप देखिए व्हाट इज द promoter funding required and that funding has been arranged. Next question please. I know. Just a minute. Why are we all together? Somebody asked a question on political. Answer that. किसी ने मुझसे पूछा about PMO, I must answer that. Just a minute, one at a time please. आपने पूछा PMO के बारे में, let me answer. I don't know what is the question. I have not met PMOs. Okay? Just a minute, here is the answer. In our immediate term, what we are doing is assembling here. Immediately our bill of materials will be largely set on the chipset for imports. The chipset. The rest of it, Taiwan, not China, Taiwan. And at the moment, what we are saying is, so we understand. Just a minute, please shake that head. What I'm saying is very clearly, as far as we are concerned, the chipset will form the import basics for a while because of the aspects of production. As far as the non-chipset, we have slowly got, in fact, rapidly, and when we put the first plant into production, most of that will be produced here. That means right from the housing, right from the PCBs, we will be making them here. Pass on GST. Okay, so right now so the Noida plant is not functional. It is. What we have in Noida are just now assembly facilities at E-Tech 3. So this is what I'm saying. That is where it is just now. We want to bloom it up into a full plant lady. So that means a lot of other stuff have to be added, which is in the progress that we are now negotiating at, and it will be installed. These are modular plants. They don't need so much gestation time. It's just going to bring the equipment and start. You also talked about, you give a breakdown of the 251 pricing. I'm just trying to understand, there are a lot of ifs and buts here, whether the GST comes in or not, and whether the partnerships come into place or not. What happens if all these do not come through? A simple old adage. In business, no risk, no gain. Okay. So there, just a minute, no risk, no gain. How do you calculate risk? So we are taking, like in good businessmen, we are taking calculated risks. What is the hedge to those risks? Each company has its own, we also have. That's a subject of a long debate. Can we keep it for later? Now I'm just trying to understand, like when the Nano came in, everybody thought it will be 1 lakh, but the price eventually went up. So is there a possibility that the price of this phone could also go up? Auto car has performance issues, which are emission issues, different things. So I won't comment on the Nano, but you will admit that when the Takas took out Nano, that was a tremendous pioneering effort. And even today, the Nano is not so expensive, depending on which model you're looking at. So I'll leave that aside. We won't go into auto cars. But coming back to the smartphones, what we call the Android phones, you know the way technology is going. It's all about nanoization. Since you're asking it, let me come from. So I don't know how technology holds. All I'll share with you, we are technocrats. We will stay in the game, if not ahead of the game. Okay, and the other thing I wanted to understand was you talked about bringing this phone online. So is it going to be your own platform? Are you looking at the moment? I'm sorry to cut you, but just to bring it what I shared earlier, we are starting off with our own website bookings this time. By next time we may have, we're starting off just to save our costs and commissions add on. But by next time, as I've already said, we are looking at
our platform to be used by other people for their market. So I may be talking to you a different thing the next time. And how about the service bit? How are you taking 650 plus service centers are already actualized pan-India as I speak to you now. And the idea is, first thing for us, our motto is, we must give customer service absolute topmost priority. So we have very stringent guidelines all laid down, because that is how you stay ahead in the game. And just wanted to clarify what you said.